पोएट्री। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से जो लर्मनटोव की पोइट्री है उसमें कौन कौन से अहम थीम्स हैं। क्योंकि लास्ट पॉइंट जो है वो मैं अपडेट कर चुका था आप लोगों की, तो अब मैं कंटिन्यू करूंगा कि कौन से थीम्स और मोटिव्स। मोटिव्स बेसिकली वो हमारी सिंबल्स हैं लिटरेचर के अंदर, या वो इमेजेस हैं which works as symbolically. So we'll talk about important themes and motifs in Lermontov poetry. जी, Lermontov, the greatest poet and the writer of 19th century, was a truly talented and comprehensively developed. हाँ, यानी कि greatest poet, writer of the 19th century, truly talented और comprehensively developed है। मैंने आपको बताया था कि चूंकि इसमें रोमांटिक स्पिरिट बड़ी मतलब जो है वो बहुत ज्यादा मतलब जो है वो भरी हुई है, तो दैट्स व्हाई वी ऑब्जर्व हिम एज अ टैलेंटेड मैन। जी, The theme of the literary works in compass great up-to-date topic and affect every person's feelings and emotions. हाँ, ये जब भी आप इसके थीम की बात करेंगे तो ये हर बंदे को मतलब जो है ये अप टू डेट टॉपिक्स हैं, हर बंदे की फीलिंग्स और इमोशन को हिट करता है। जी बेटा। यस, सर आपकी आवाज कटी जा रही है थोड़ी सी। आप देखें अब ठीक होगी। जी, the main themes The and main motifs. themes and motifs of the main themes and motifs of the lyrics and aimed at the search for spirituality, a fresh breath of freedom. There are signs of a fighting against the society and his opinion opposed to him. हाँ, तो उसके जो मेन थीम्स और मोटिव्स हैं, जो उसकी लिरिक्स के, इनका असल पर्पस था कि स्पिरिचुअलिटी, a fresh breath of freedom. There are signs of fighting against the society, कि जो एग्जिस्टिंग सोसाइटी थी, और सोसाइटी कौन सी, कि जो टायरानिकल सोसाइटी थी, जिसमें जो जार खानदान था वो दबा के रख रहा था लोगों को, उनके खिलाफ लड़ना, and his opinion opposed to him. जी, This can be seen in a work such as Sail, where the अब thoughts of the lyrics and हमारी the जो पोएम द सेल थी, जहां पर बड़ा शानदार अंदाज से हम ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि किस तरह से वो अपने आप को तन्हा महसूस करता है, where the thoughts of lyrics are directed into thinking about freedom and a difficult struggle for the sake of great goal and sense. जहां पर हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि सेल के अंदर वो कौन सी दास्तान जो है वो हमारे सामने मतलब जो है वो एक्सप्लोर करता है। जी, Mikhail Yorovich. Mikhail Yarich meditating on the meaning of the life and the nature of man's creation in looking for a great destiny. डेस्टिनी कि आपकी एक अच्छी किस्मत की तरफ जो है वो हमें जाना चाहिए। He sees it in the unity of man's nature. वो इंसान की मतलब जो है वो ये फितरत में देखता है, the continuous search for himself and the daily battles of knowledge, ignorance, striving for an ideal, for perfection, moral spiritualization. जी, Loneliness, the theme of a fatigue फटीग, and यानी कि the theme of fatigue, loneliness, जो तन्हाई है, जो थकन है। from society literally shines through every poem of the poet. हाँ, ठीक है। Disappointed in an idle, meaningless life, empty and pointless Lermontov seeks rest in such a harmony with himself, with nature, meditating in the poem. When the yellow field fears, demon, cliff at the hardest hour of life, ये वो उसकी अहम 3 पॉइंट्स हैं जिनके अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं कि
कि किस तरह से वो चीजों को इंगेज करता है. Not the last place in work of the poet and prose writer is the theme of tragic love. इसकी जिंदगी में मतलब लव जो है वो किस फॉर्म के अंदर हमें नजर आ रहा है? It's in the form of tragedy. तो tragic love जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है. फिर वो आगे मतलब जब वो फर्दर बात करता है कि जो लव है इट्स a tragic one, extinct, magical in the past and complete disappointment in the present. The poet discusses the present and future generations broadly, reflecting on the fate of Russian people, on power and autocracy, कि कैसे उनके ऊपर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है. His poems are filled with righteous anger and denial. कि बिल्कुल मतलब जो दुरुस्त बातें हैं, राइटियस एंगर हैं और जो डिनायल है उसके ऊपर, फुल ऑफ लव फॉर द फादरलैंड. द पोएट थर्स्ट फॉर द रिवाइवल ऑफ द फेथ. नेक्स्ट. जी मरियम. Not the lost place. सर यहाँ से रिवीलिंग द पर्पस. revealing the purpose of the poet as an orator, as a voice of the people, and on his behalf to the death of Alexander पुष्किन. Pushkin. हाँ. He writes a poignant poem, the death of a poet. full of message, full of मतलब जो थी वो मैसेज के साथ मौजूद थी. The death of a poet, full of anger and admiration by the fighter, threatening and issuing a verdict to the murderers and contemporaries of the creator. They are unworthy of such a high, rebellious and spirit. अच्छा हुआ किस्मत आपसे ये स्पिरिट जो है वो वापस ले गई है. आप इस काबिल ही नहीं थे कि ऐसे बंदे को जो है वो आप अपने पास रख सके. Protesting and exposing false orders. Lermontov on one hand tries to coup with helplessness and powerlessness against rule order. कि हुकूमत की तरफ से जो बुरे और बदतरीन ऑर्डर्स आते थे, अहकामात थे, उनसे his other spirit is filled with the hope that in future justice will burst, that will cast off the shackles of society. बिल्कुल दुरुस्त परसेप्शन थी उस बंदे की कि एक दिन आएगा कि जब इस जार की टायरनी जो है वो खत्म हो जाएगी. जार की ये जो टायरनिकल जो मामला था ये खत्म हो जाएंगे. His menacing treatment flies towards the dominant power killing his beloved homeland. जी बेटा. The lyrics of the first half of the 19th century are permeated with romantic pathos. हाँ, यानी कि in this collection जो पहले हाफ 19th सेंचुरी की जो फर्स्ट हाफ की जो लिरिक्स हैं इनके अंदर मतलब जो रोमांटिक पैथोस, पेन्स एंड सफरिंग मौजूद हैं. In this collection, the main motif of Lermontov's lyrics are in many respects consonant with the moods of romantics. ये रोमांटिक के मूड के साथ जो है वो मतलब जो वो कॉन्सोनेंट करता है. Who were inclined to praise freedom and will, heroic deeds and exploits, admired the contemplation of nature, suffered for non-acceptance and misunderstanding by the Philistine society because of what they want to war. They left for exotic countries. तो ये वो सारा environment था जो उस वक्त हमें इर्द गिर्द नजर आता है. ये वो सारी चीजें थी जो उस वक्त हमें इर्द गिर्द दिखाई दे रही हैं. तो वो उन तमाम चीजों का बड़ा खुलेआम तज़किरा करता है कि किस तरह से इस एनवायरनमेंट के अंदर वो मौजूद था, किस तरह से वो सारी चीजें जो थी वो उस वक्त एग्जिस्ट कर रही थी. तो ये हमें ये देखने की जरूरत है कि एडमायर द कंटेम्पलेशन ऑफ नेचर. वो उस वक्त मतलब जब उसका इर्द गिर्द जो था वो सारा बदतरीन हालत में था. Suffered from non-acceptance and misunderstanding by the Philistine society because of what they want to war. They left for exotic countries. All this is not alien to the lyrics of Russian poet, but it also has its own characteristics. It should be noted that the motive is often identified with the theme. जो motive है वो theme के साथ identified है. The semantic dominant
which is the key in works, is characterized by frequency. The motive can also express the general meaning of a number of poems. ये जो different motives हैं, motive से मुराद की जो उसने images इस्तेमाल किए हैं हमारे सामने, वो represent a whole image, a symbol. So speaking about the motivations in Lermontov's work, one should take into account that under the motive, one can understand both the theme and the general symbol are the लीडिंग मोड है कि जो है वो उसको थीम को भी देखना चाहिए, जनरल सिंबल को भी देखना चाहिए, और लीडिंग मोड जो है वो भी उसको मतलब समझ आना चाहिए कि पोएट जो है वो क्या कहना चाह रहा है। जी बेटे। During his short life, Michel Yerich had time to see, learn, and live after himself. He led Russian poetry after Pushkin, and he could not do everyone. रशियन पोइट्री को किसी बंदे ने पीक पर पहुंचाया तो वो पुश्किन है, और उस बंदे को अगर किसी बंदे ने मैच्योर किया है तो वो लर्मोंटोव है। जी बेटा। So if we consider the theme of Lermontov's lyrics and single out of a number of series and the Russian people as well as the contemporary poet of the generation. हाँ, तो हम ये we can single out a number of serious problems of mankind, the Russian people as well as, तो फिर उसकी points जो हैं Thus the discovered the theme of the loneliness represent नहीं कर रही, बल्कि overall वो इंसानियत की representative है। जी, loneliness is the leading motif of the most of the poem. Thus the discovery the theme of the loneliness of the individual in a hostile and unjust world. The loneliness of the poet amid an indifferent crowd, the loneliness of a young man disappointed in love, जो तन्हा है, the lyrical hero who is often identified with the author suffers from the inability to find a like-minded person, a native soul कि जो उस जैसा सोचता हो, जिसके अंदर उस जैसी मतलब approach हो, the despair of existence, a permanation of his own tragic death. Lyrical hero Lermontov on the one hand becomes on the way active prophetic जो बंदा जो है वो फ्यूचर के हवाले से बात करता है, seeks to influence the crowd, change something in the state system. The political system on the other is a disappointed because of the futility of efforts. जितनी भी आप efforts कर लें वो सारी की सारी हमें नजर आती हैं कि वो useless हैं. Closing himself in his universe, far from the earthly life. In this regard, parts of the poems are devoted to socio-historical problems कि जो उस वक्त उसकी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स थी वो उनको डिस्कस कर रहा था. इन थीम द हीरो फाइट्स फॉर फ्रीडम, वो फ्रीडम के लिए लड़ता है. मैनिफेस्टिंग हिज रिबेलियस कैरेक्टर, वो बताता है कि जनाब अगर आपने इस जार इस टायरेनी से लड़ना है तो फिर आपको इसको चैलेंज करना होगा. जी, मेजर पॉइंट्स आर written under the influence of a Decembrist poetry. Decembrist revolt मैंने आपको तारीख में इसकी बताई थी कि वो 1925 में हुई थी जार के खिलाफ. और it is important to note that Lermontov's speech is about absolute freedom, कि वो आजादी चाहता है, that it has a romantic character. और romantic poetry जहां भी दुनिया में लिखी जाएगी वहां constraints नहीं है, वहां आजादी की बात होती है, और personal freedom becomes a step towards freedom. जी, whoever tries to buy with his suffering and proud victory over the earthly divine soul, boundless freedom. तो ये उसकी एक पॉइंट के अल्फाज हैं कि जो कोई भी to buy with his suffering and proud victory over earthly divine soul, boundless freedom. तो मतलब जो है वो आपको जो है वो फ्रीडम के साथ boundless freedom और के साथ जाना होगा. The theme of the will is present in the poems will and desire. Will is something natural given to a person at birth. कि आपको आपकी मर्जी जो है वो आपको बचपन से मिल जाती है, but often inaccessible, either left in the past or located in the wild lands. The carcass becomes a symbol of simple liberty. I love the chain of blue mountains. कि मुझे ये जो blue mountains हैं इनसे बड़ी मोहब्बत है. The blue mountains of the Caucasus, I greet you. The poet becomes
The poet comes to the conclusion that in a modern society, the freedom-loving free soul does not have a place. जो कोई बंदा आजादी से मोहब्बत करता है उसकी इस दुनिया में कोई जगह नहीं है. In the struggle of the lyrical hero with life, mob, destiny, passions, the desire for freedom also manifests itself. The theme of non-acceptance by the poet of contemporary society. In the poem, the Duma, the masquerade, उनके अंदर भी हमें जो है ये थीम नजर आते हैं. In vain, I seek amusement everywhere. हर जगह पर जो है वो मैं amusement देखता हूँ. The crowd is buzzing and buzzing. सारे मेरे सामने buzz करते हैं. Crowd है, कौम नहीं है. But my heart is cold and my imagination is asleep. They're all alien to me. मैं उन जैसा नहीं हूँ. And I'm all stranger to them. वो मेरे लिए सारे के सारे अजनबी हैं. क्योंकि जिस तरह से जिस नहज पर जिस पॉइंट पर मैं सोचता हूँ वो उस पॉइंट पर नहीं सोचते. जी बेटा. Therefore, the destructive influence of light on the soul of people is shown. With the rejection of the soulless nobility, the motive of the expositions of a opposition of a cold and hostile society and for the world of freedom is consonant with the rejection of the soul. रीडिंग हो रही है कि जो soulless nobility है इस तरह से यहाँ पे हमें दिखाई देती है. Quite naturally appears in the lyrics of the poet and motive of captivity. Sometimes the place of captivity is a monastery in which one can discern an anti-clerical mood. कि एक बंदा जो है वो anti-clerical mood देखता है. But this is more connected with Lermontov's socio-political position. In his poems, one can see the movement from the first from the thirst of absolute individual freedom. हर बंदे को आजादी मिलनी चाहिए, आजादी उसका हक है, और peculiar to romantics to her for the sake of familiarizing with the world of people, since the latter does not bring the hero of happiness. So freedom and will become the central motive of Lermontov's lyrics. तो ये एक freedom जो है, loneliness जो है, ये उसके अहम तीन motives और themes नजर आते हैं. The thirst for action, कि हमें अब एक्शन करना है, हमें अब अपने आप को मतलब सुला नहीं लेना. And deed in the name of honor, fame and memory also take a prominent place in Lermontov's poetry. I need to act every day. I wish to be immortal, like the shadow of a great hero. Lermontov often calls the heroic deeds of the past Russia के past में किस किस तरह के मतलब heroic deeds हुए हैं. Such poems also touch upon the theme of motherland. तो उसको अपनी जमीन से धरती माँ से भी मोहब्बत नजर आती है. But the action of the lyrical hero often encounters a misunderstanding, a rejection, irresponsibility, or deceit. As a result of which he becomes on the path of revenge. कि वो revenge के रास्ते पर चल निकलता है. So under the burden of being does not get tired, and the proud soul does not chill. Here fate will not kill so soon, but she will only rebel. Vengeance of breed against the invincible, much evil she is ready to accomplish. तो कहता है under the burden of beings does not get tired, कि अपने जिस्म के वजूद से कोई बंदा थकता नहीं है. And the proud soul does not chill, उनको कोई परेशानी नहीं होती. Her fate will not kill so soon, but she will only rebel. मतलब यहाँ पे बहुत जल्द जो है वो rebellious होगी और ये जुल्म जो है वो एक दिन खत्म हो जाएगा. The thirst for freedom, the desire for the ideal, attempt to change something in the world, reflect the main conflict of romanticism, the contradiction between the ideal and reality. In Lermontov's poetry, it reaches extreme tension. This leads to fact that earthly being is often regarded as vain. कि हम जो जितने हैं वो हम vain हैं, purposeless है, because the genius built into genius. कि जो geniusness है, जो geniuses हैं, वो genius के साथ मतलब अक्ल वाले के साथ cannot be realized here. The vainness of active activity जो है वो यहाँ पे हमें नजर आती है. And self-giving is absorbed in the poem The Prophet. The poet, his appointment and fate is another important topic in Lermontov's lyrics. The poet is called upon to influence the popular crowd. Election and the power of the poet entail the appearance of metaphysical anxiety, inexplicable mental torment, the thought of the transience